Laszlo Krasznahorkai, आप सोच रहे होंगे what am I exactly saying? Well, that's right. 2025 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इवन दो ये अवार्ड जो है ऑफिशियली दिसंबर के अंदर दिसंबर 2025 में दिया जाएगा बट वी ऑलरेडी नो कि लिटरेचर में ये अवार्ड किसको मिल रहा है. दिस इज द सेकंड हंगेरियन राइटर. 2002 में we were able to see another Hungarian writer who had got the Nobel Prize. And this Nobel Prize is very special because it shows that Central Europe की जो voices हैं वो सुनी जा रही हैं. They are also becoming a part of the mainstream. So आइए देखते हैं कि ये जो 2025 का Nobel Prize है ये किसे मिला है. Who is exactly this person? Who's this Hungarian writer that we're talking about? और हमेशा जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनिंग राइटर्स जो आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से वो डेफिनेटली कवर करना काफ़ी ज़रूरी है. और आगे आने वाली सीरीज में भी वील ट्राई टू कवर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज राइट. जैसे आज प्लस कोर्स की क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ 1923 में येट्स को आपका नोबेल प्राइज मिलता है. 1948 में you have T.S. Eliot who gets it. We also spoke about how 1986 में Volshoinka gets it. Nakib Mahfouz, the Egyptian, is also getting it. Nadine Gordimer is getting it. Qudsi is getting it. Naipaul's getting it. तो काफ़ी सारे important writers जो हो जाते हैं. We're going to explore all of them. We're going to be looking at it. German writers की class में we spoke about how Hermann Hesse received it. Right? So extremely important for all of us to sort of know these Nobel Prize. So आइए जल्दी से फटाफट से देखते हैं who are these writers that are getting. But आज हम लोग we are not going to focus on we're not going to focus on other Nobel Prize winning writers. We are only and only going to be looking at 2025 ka Nobel Prize. So let me just quickly get started. Let me just very, very quickly, share this entire thing with all of you so that you can also know. So सबसे पहले ये 2025 का Nobel Prize किसको मिला है? Who's the writer? Why is he so special? What is the speciality of Laszlo? Why is it that Laszlo has actually received this Nobel Prize, right? So this man right in front of me that you're largely able to see is Laszlo Krasznahorkai. Laszlo Krasznahorkai. Laszlo, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कर सकते हैं. Laszlo Krasznahorkai. Krasznahorkai. Laszlo Krasznahorkai. He's the Hungarian writer who's actually received it. He has received the 2025 English Nobel Prize that you're largely able to see. So Laszlo Krasznahorkai is the writer. और जैसा मैंने आपको बताया, he's the second Hungarian writer to actually get it. So this is really beautiful that how voices from Central Europe are being heard, how people are actually looking at them all together. And Emre Kurtz got the Nobel Prize in 2002. He was the first Hungarian writer to get it. After that, we have Laszlo Krasznahorkai. Laszlo Krasznahorkai is the recipient of the 2025 Nobel Prize. ये स्टॉकहोल्म में दिसंबर में जैसा मैंने आपको कहा प्रेजेंट किया जाएगा ऑफिशियली. बट इट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट पॉलिटिकल कोलैप्स, ह्यूमन फ्रिजिलिटी, ये सारी थीम्स जो आपके सेंट्रल यूरोप से आ रही हैं दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इनका जो स्टाइल है वो इजी नहीं है. तभी इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद काफका. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. बट Laszlo Krasznahorkai well deserved Nobel Prize for 2025. Okay. कुछ कुछ चीज़ें जो आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं. नोबेल प्राइज ने साइट किया था कि इनको ये प्राइज क्यों मिला है. ही इज बीन ऑनर्ड फॉर हिज कंपेलिंग विजनरी स्टेटमेंट. जैसा हम कहते हैं राइटर्स आर प्रीसियंट इवन इन आवर प्लस कोर्स. दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो प्लीज रिमेंबर दैट he tells you in the context of a changing world the way that he represents his writing that is very important. Dense philosophical prose hai. You have existential crisis, you have isolation, you have chaos that you're largely able to see also, right? That is also a very important part that you're largely able to look at. It's dense, it's philosophical prose. Again, like I said, it's demanding. It's not easy to read Laszlo Krasznahorkai. ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, सोशल कोलैप्स, आइसोलेशन, ह्यूमन फ्रेलिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तभी इनको काफका एंड थॉमस बर्नहार्ड के साथ भी कंपेयर किया जाता है. द वे दैट ही इज टेलिंग अबाउट द absurdity of modern existence, that's really beautiful. So please remember that his compelling visionary work, especially the apocalyptic terror that you're largely able to see. That's the reason Krasznahor
Hawkeye received the 2025 Nobel. आपको ये सारे works जो हैं, these are all by Krasna Hawkeye. You have San Tango, you have the Melancholy of Resistance, War and War. रादर अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि इनकी दो तीन वर्क्स एक्चुअली मूवीज में भी बन चुकी हैं, सो दे आर वेरी पॉपुलर. Sibo There Below, Sibo There Below is like, very important and very translated work that you're largely able to see. So Krasna Hawkeye tries to capture that apocalyptic terror, very Kafkaesque state where the individual is pitted against the state, where the individual is actually having these absurdity like situations. तो बेला टार ने इनकी काफी सारी मूवीज लाइक द मेलेंकली ऑफ रेजिस्टेंस, सैंटैंगो, ये सब अडेप्ट करके फिल्म्स में भी बनाया है. सो अगेन द सेकंड हंगेरियन वेरी वेल डिजर्व्ड राइटर हु इज गेटिंग द नोबेल प्राइज. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. 2025 का जो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर गोज टू लाज़्लो क्रास्नोहॉर्काई. लाज़्लो क्रास्नोहॉर्काई इज द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज 2025. आगे आने वाली सीरीज में we will make sure that we sort of also deep dive, we also take a look at some important Nobel Prize winning writers so that you're getting an access, you get an understanding of कौन से writers हमारे लिए important है, who are the writers that we sort of need to cover from our examination perspective. But of course 2025 Nobel, I hope you're all very clear who has got it. Laszlo Krasno-Horkai, he's the recipient. Apocalyptic terror के लिए, that is where Horkai is getting the prize. I'll catch up with all of you in the next video. Thank you so much.